Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, guys. So first of all, I want to give you a very big news, and that is a big news for Imlaak as well, and for all the people who are following us. And that is that Imlaak has officially entered into Dubai real estate market. And inshallah ta'ala, in months to come, we are going to increase our presence in Dubai. We are in the process of opening up an office in Dubai as well. और उसके अलावा भी जो है हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला on our website will keep sharing good projects and good options where you can invest. It is especially very important for the expats in Pakistan, of Pakistan जो invest करना चाहते हैं safely and soundly, and they are doing it for a couple of years. और अब इंशाल्लाह ताला they can do it through us and they can take the advantage of our consultancy, और उसके through वो they can have maximum returns inshallah ta'ala. The same way we have given you returns in Pakistan, inshallah ta'ala, the same way we are going to do that in Dubai and find you the best projects to invest your money in. So the first thing is the most important question of the entire Dubai episode is that everyone, before I went there, मैंने अपने इन्वेस्टर से बात की, मैंने अपने दोस्तों से बात की जो दुबई में बैठे हैं, जो यूके में बैठे हैं, जो सऊदी अरब में बैठे हैं, और मैंने सबसे बात की कि यार दुबई मार्केट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड एवरीवन वाज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि यार द मार्केट इज गोइंग डाउन एंड इज क्रैश बाय 30-40% एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स नॉट समवेयर टू इन्वेस्ट. एंड that actually for me was a signal that I should go there, because this is probably the time to start putting my money in there. So now you guys can rely on us once you want to invest in Dubai, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी को इधर समझाया है, द सेम वे इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू डू इन दुबई, और हम आपको समझाएंगे कि सिमिलरली जिस तरह प्रॉपर्टी यहाँ पे साइकिल्स पे चलती है, सिमिलर वे उधर भी चलती है साइकिल्स के अंदर. और इसी तरह जहाँ पर लाहौर में आपके सामने है कि किसी जगह के ऊपर इस वक्त देयर इज़ नो मनी टू बी मेड, and we went to Peshawar and we went to other cities and we have been telling you people to invest in Multan. Similar pattern दुबई के अंदर भी, सिर्फ दुबई का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, दुबई के अंदर किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दुबई में ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो बिल्कुल स्टैग्नेंट हैं, जो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देंगी एंड प्रॉबली वेरी लिटिल रेंटल. और वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम राइट दे वांट ले ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच आर एक्चुअली डेड. ठीक है, एंड दैट इज वेयर वी कम इन एज कंसल्टेंट्स, दैट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर यू. अच्छा, वो प्रॉपर्टी कौन सी एग्जिस्ट करती है? सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द दुबईज मार्केट एसेस, कि दुबई की मार्केट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे बेस करके, you will never go in loss, actually you will make huge profits, but that's for another video. For right now we are just going to tell you about capital cycles in Dubai market. वजह ये है कि in 2009 we're not going to go a little back, अगर आप पीछे जाएंगे तो 2002 और 2000 के अंदर बेसिकली ये हाइक शुरू हुआ था. by 2009 जब इकोनॉमिक क्राइसिस और वर्ल्ड रिसेशन हुआ, रिसेशंस का भी मैं आपको बता दूं, वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, प्लीज उमर नोट इट, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं रिसेशंस, देयर इज अ ग्लोबल रिसेशन कमिंग. तो ग्लोबल रिसेशंस कीप कमिंग, देयर हैव बीन 4 global recessions so far since World War II, and they will keep on coming, but they normally come after 20 years. We are still 10 years to go before any global recession, and even if global recession hits, that gives you an opportunity, because जो bubble होगा वो break हो गया and you can actually buy at a lower prices. What happens is कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं हम डर जाते हैं और हम डर के उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, and then जब चीज़ें ऊपर जाने चलती है, it gives us a positive vibe and we start investing into that. और वो क्या होता है कि जब वो बबल दोबारा से ब्रेक होता है तो वी गो डाउन, और फिर हम ब्लेम करते हैं कि यार ये तो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो व्हेन, वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट फॉर यू. सो राइट नाउ इफ यू कंसीडर 2009 की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश की, दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट्स जो 3 साल के अंदर जिसने रिबाउंड किया, which says a very strong standing for the market. 2012 से 2015 तक इनकी market that went up again, and since 2015 and 16 somewhere the property market is going down again in Dubai.
30 to 40% again down है. So for me this is a typical cycle which is happening in Dubai right now. Or this is not the time to buy, this is the time to buy, right? If you understand my point, यहाँ पे जिस बंदे ने बाय की, वो जो प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, वो गलत बाइंग थी. जो सही टाइम है बाइंग का वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से भी 10% और नीचे चली जाए, लेकिन ये टाइम यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली कि यार उसने कहाँ पे जाके रुकना है. बट व्हाई आई थिंक दैट दिस dip in 2019 is going to be the end of it. The reason is 2020 Expo. Right? Again, what if, a question for another video, what is going to happen in 2020? And inshallah, we're going to explain to you why 2020 is so important for the real estate sector and how it is going to give that much needed strength Dubai real estate market needs. But the question is, as far as price corrections are concerned, any market which crashes by 30 to 40% or 50% is some place where I feel that we should start investing. So similarly, the thing which I wanted to talk to you about is a Dubai market. अगर आप यहाँ पे 40% के ऊपर invest करते हैं, if I give you some options where you can actually make for the next 3 years or to 4 years, you can make 7 to 10% rental returns. That means technically, even if the market crashes by 10 or 15%, in 3 years time you're making 30%. So you are still safe because you have made 15% extra. Right? आप अभी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, let's suppose, इसको easy words में करते हैं, आप 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, इसके ऊपर आपका रेंट आ रहा है 7,000 रुपया पर साल. अगर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अभी 10% और गिरेगी या 15% और गिरेगी, और आई एग्री विद यू कि शायद गिर जाए जी 2019 के अंदर, तो अगर ये यहाँ पर आकर 85 की हो जाती है, 85,000 की, और 2 सालों के अंदर आपने 14,000 रेंट ले लिया, सो क्या आपका नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? सो यू आर एट पार. So that means कि it is at this point जहाँ पर आपका नुकसान होने का चांस is very 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 minimum. So that is the time to buy. Exactly इसी को कंसिडर करें जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया about profit and loss ratios और उसका जो इंडेक्स था. We believe कि हम इस वक्त profit risk index में if we play in Dubai, we are at a very minimum risk of 10 to 15%, and we have an upside of 30 to 40% plus 30 to 40% in rental yields. So we have a total upside of somewhere like 60 to 80% maximum, and a lower side of roughly 10%, 15%, that too which is coverable by the rentals. So it is a very safe investment. And that is exactly what we have been doing. I'm again going in March, and inshallah I will bring more options to the table regarding Dubai property. Until then, take care and Allah Hafiz.